Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing very well. I am Shama Parveen, your new social science educator. Today, I am going to take your history classes. Okay? So, the first chapter of history is what, where, how, and when. Okay? See, history हमेशा इसी से start होता है. ठीक है? What, where, how, and when. Okay? So, come with me and explore the chapter. But before I start this chapter, I want to tell you the few objectives why we are studying this chapter. Here you can see on your screen, define the concept of history and its significance. Okay? इस चैप्टर में हम लोग हिस्ट्री क्या है और हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम ये देखने वाले हैं. ठीक है? Then understand the role of different time periods and geographical context in shaping history. Okay? So different time periods जो भी history में अभी तक बीते हैं, we are going to see all these things in this chapter, and apart from them we are also going to see how geography play an important role in history. Okay, how geography and history are correlated. Learn about various methods historians and archaeologists use to study the past. Okay, इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि historians और archaeologists पहले तो ये होते कौन है, ये कौन है ये लोग. ठीक है, हम इनके बारे में भी इस चैप्टर में देखेंगे. ओके, सो इस चैप्टर का ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. अब चलो मेरे साथ डिटेल में पढ़ते हैं इसको. ठीक है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी इंट्रोएक्टिव. अब ये इंट्रोएक्टिव क्या है? ओके, देखो, डू यू हैव पिक्चर्स ऑफ योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स? ओके, मीन्स have you any picture of your parents, of your grandparents? Okay, what is the meaning of great grandparents? Means the parent of your grandparents. Okay, they are your great grandparents. If so, please provide some pictures of them in the box below. Additionally, share from whom you received these pictures. अच्छा, आपको इसमें क्या करना है, इस पैराग्राफ में आपको क्या करना है? देखो, आपको ये बॉक्स दिख रहा है. ठीक है, इस बॉक्स में अगर आपके पास आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की पिक्चर है, देन यू हैव टू पेस्ट देयर पिक्चर हियर. ओके, एंड ऑल्सो यू हैव टू शेयर कि आपको उनके पिक्चर्स कहाँ से मिले हैं. ठीक है, आपको उनके पिक्चर किसने दिया आपको. ठीक है, just like how these pictures of your great grandparents are cherished and preserved by someone in your family for future generations to see. अच्छा, अगर आपके पास आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो है, तो आप ये सोचो कि वो तो आपके ग्रैंड पेरेंट के भी पेरेंट है, तो आप सोचो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने एंड आफ्टर योर ग्रैंड पेरेंट्स आपके पेरेंट्स ने कितने अच्छे तरीके से उस पिक्चर को प्रिजर्व करके रखा है. अगर है नहीं है दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन अगर है तो आप सोचो 3 जनरेशंस ने उसे प्रोटेक्ट करके रखा. ठीक है, और वो कौन कौन से 3 जनरेशन हुए? पहला तो सबसे पहले तो आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने पिक्चर प्रिजर्व किया. ठीक है, देन आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, देन आपके पेरेंट्स ने. ओके, एंड नाउ दे आर पासिंग योर देयर लेगेसी टू योरसेल्फ. ओके, अच्छा, अब देखो, सिमिलरली देयर आर वेरियस सोर्सेज थ्रू व्हिच वी लर्न अबाउट आवर सोसाइटीज हिस्ट्री. ओके, सी ये जो अभी हमने पिक्चर की बात की, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट योर ओन फैमिली हिस्ट्री. बट व्हाट अबाउट आवर कंट्रीज हिस्ट्री और आवर वर्ल्ड हिस्ट्री? ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे. ठीक है, किस तरीके से हमारी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखा है और किसने प्रिजर्व करके रखा है हमारी हिस्ट्री को. ठीक है, आ जाओ देखते हैं. तो मैं कब से स्टार्टिंग ऑफ द क्लास से कह रही हूँ मैं हिस्ट्री की क्लास लूंगी, मैं ये हिस्ट्री ये है, बट हिस्ट्री होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री? ओके, सी, history is the tale of what happened in the past. See, actually history is the study, means history studied about our past. ठीक है, history जो हमारा past है, जो कि बीत चुका है, उसकी जो स्टडी की जाती है उसी को हम history बोलते हैं. ठीक है, the word itself comes from the Greek word historia, which means inquiring into the past. See, my dear student, history, okay, the term history is taken from an ancient Greek word that is historia, means history is none other than, it's a Greek word. Okay, means historia. And what is the meaning of historia? It's all about inquiring into the past. Okay, so it means through history we are inquiring our past. Okay,
It's like a big storybook that tells us about humans, places, and things that happens before now. Okay? In history, actually, history is a book. Okay? Actually, history is a storybook through which we study about our past. Okay? Through which we study about the past of our means past of about human beings as well as places. Okay, and as well as all the things which happened in our past. Okay, so collectively, a simple statement for what is the meaning of history. History means a branch of a study through which we discover about our past. Okay, all the events which happened in our past. So that study is called as history. Okay, so I hope, my dear students, the meaning of history is clear to you all. Okay, now see, हिस्ट्री है, चलो ठीक है, समझ में आ, पर हिस्ट्री की जरूरत क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में. ओके, व्हाई वी स्टडी अबाउट हिस्ट्री, लेट्स हैव अ लुक. सी, studying history provides solution to a lot of questions about the past. It is crucial to study history because it teaches us the following things. See, अगर आप हिस्ट्री की बात करते हो, ठीक है, तो हिस्ट्री एक तरीके का सोल्यूशन है जो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता है. क्या है वो? फॉर एग्जाम्पल देखो, आप सब लोग जानते हो डायनासोर्स, ठीक है, सबको पता है डायनासोर्स, बहुत सारी मूवीज भी बनी है डायनासोर्स के ऊपर, ठीक है, लेकिन डायनासोर्स क्या अभी प्रेजेंट हैं? नहीं है. ये कब प्रेजेंट है? मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले. ठीक है, हमें हमें कैसे पता चला कि वो डायनासोर है? बिकॉज वी गेट देयर फॉसिल. ओके, हमें उनके स्ट्रक्चर्स मिले हैं. ठीक है, सो द स्ट्रक्चर ऑफ दैट डायनासोर्स इज कॉल्ड एज फॉसिल्स. ठीक है, अच्छा, अब उसकी जब पढ़ाई की गई, ठीक है, तभी तो पता चला कि इस डायनासोर का शेप ऐसा था, ये हार्बीवोरस था, तो ये कार्निवोरस था, इनकी हाइट इतनी ऊंची थी. ठीक है, हमें ये सब चीजें कहाँ से पता चलती हैं? ये सारी चीजें हमें हिस्ट्री से पता चलती हैं. ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री क्या करता है? हमें हमारे पास्ट के बारे में बताता है. ठीक है, सो सिमिलरली स्टडिंग हिस्ट्री प्रोवाइड सोल्यूशन टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया, ओके फाइन, अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये कैसा रहा होगा, इसकी मतलब हाइट कितनी रही होगी, ये क्या खाते रहे होंगे, ये कहाँ रहते थे, या फिर डायनासोर्स खत्म कैसे हो गए दुनिया से अचानक. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इनका सोल्यूशन क्या है? हिस्ट्री. ठीक है, सो मेनी प्रॉब्लम्स, सिंपल सोल्यूशन, स्टडी ऑफ हिस्ट्री. ओके, सो अच्छा, अब देखो हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हमारे बहुत से क्वेश्चंस हैं. लेट्स हैव अ लुक. व्हेन, हाउ एंड वेयर आवर अर्लीस्ट एंसेस्टर्स अपीयर्ड. सिमिलरली द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज व्हेन, हाउ एंड वेयर. ठीक है, अब हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है जो हमारे एंसेस्टर्स थे, मीन्स हमारे जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, वो दुनिया में कब आए, कैसे आए और कहाँ आए. ठीक है, मतलब जो हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स है, व्हेन दे अपीयर्ड ऑन प्लैनेट अर्थ, how they appeared and where they appeared. Okay, so history gives the answer of these three questions. Okay, that's why the study of history is so important. Okay, now the second thing, what our ancestors ate, how they lived, and how knowledge of agriculture, irrigation, animal husbandry, etc. contributed to a more stable and secure way of life. So my dear students, you all are class 6th student. Okay, in your previous class, means in your class 5th, you already studied about the life of early human beings. Okay, so in that portion you studied how early human beings discovered about agriculture, how they discovered or how they invented about fire. Okay, how they invented wheels. Okay, see, so history is important because we want to know about that our ancestor, means early human beings, how they used to live, means where they used to live. Okay, what food items they used to eat. Okay, and how they developed the concept of agriculture, the concept of irrigation, and how they also developed the concept of animal husbandry, means rearing of animals. Okay, so history gives us the answer of all these questions. Okay, that's why study of history is so important. Okay, now let's move further. See, how common people and some of the greatest leaders have influenced our culture and civilization. See, my dear student, history also helps us to recognize all those human beings, all those great human beings who influenced our culture and who nourished our civilization. Means, see, throughout the civilization, even throughout the period of time, we always get some great leaders. Okay,
So all these things are discovered with the help of history. Okay, how language have developed and how the scripts have changed over time. हिस्ट्री से हमें ये भी पता चलता है कि लैंग्वेजेस कैसे डेवलप हुए. ठीक है, अर्ली ह्यूमन बींग्स क्या कौन सी लैंग्वेज में बात करते थे, ठीक है, वो किस तरीके से कम्युनिकेशन करते थे. तो ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं हिस्ट्री के थ्रू. ठीक है, ये सब कुछ हमें पता चलता है हिस्ट्री के थ्रू. ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए हमें हिस्ट्री की जरूरत पड़ती है. नाउ historians and archaeologists are experts who studied what happened in the past. See, before the starting of this chapter, I told you about two terms, historians and archaeologists. Okay, now see, historians and archaeologists are experts who studied what happened in the past. Now, what is the meaning of historian? See, the person who study about history is called as historian. This is the very simple definition. Okay, now who are archaeologists? ओके, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो खुदाई का काम करते हैं, मींस हु डू एक्सकवेशन वर्क. ओके, एंड हु डिस्कवर्ड अबाउट द वेपन्स, अबाउट द मटेरियल्स, अबाउट द फूड आइटम्स, डिस्कवर्ड अबाउट द सिविलाइजेशन. ठीक है, तो आप समझ गए हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है. ठीक है, नाउ सी, they work really hard to give us lot of details about ancient time. See, historians and archaeologists, both of the persons are working very hard. And why they are working very hard? Because they want to give us the exact information what happened in our past. Okay, to understand what happened before people wrote things down, archaeologists dig deep into the ground. See, अच्छा, बिफोर पीपल रोड डाउन. अच्छा, अब ये देखो, हमें पता है कि ये हिस्ट्री है. ठीक है, हमें ये सब कुछ रिटन फॉर्म में मिल गया. ओके, तो मैं पढ़ रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो. ठीक है, लेकिन ये सब कुछ कहाँ से पता चलता है? जब आर्कियोलॉजिस्ट ना बहुत ही ज़्यादा डीप जाते हैं. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती हैं? जब आर्कियोलॉजिस्ट अपना काम करते हैं. ओके, व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट परफॉर्म देयर वर्क, ओके, देन वी गॉट टू नो more and more about our past history. Okay, अच्छा, वो क्या मतलब, वो किस चीज को खोजते हैं, वो क्यों खोजते हैं और क्या खोजते हैं? See, they find tools, jewelries, pots and even old buildings and monuments. See, when archaeologists perform excavation work, okay, then through excavation they find out lot of things like tools, jewelry, pots and even old buildings and as well as monuments. All those things are very old. Okay, all those things are very old and they are present underground. Okay, underground. So you can see how hard work such archaeologists do. Okay, that's why archaeologists perform their work really very hard. Okay, now see, these things help us learn about how people lived long ago. Okay, so ये जो सारी चीज़ों के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं, इन सब से हमें ये पता चलता है कि उस टाइम के लोग कैसे रहते थे. ठीक है, मतलब वो किस टाइप की ज्वेलरी पहनते थे, वो कैसा खाना खाते थे. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? ऑल दिस थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट. ओके, नाउ सी, once people started writing we entered a period called history. ठीक है, अच्छा, जब ये सारी चीजें लिखी जाने लगी, ओके, when all this informations are collected in the form of written document, okay, then that written document is called as history. Okay, this means we have written records of what happened. And what is the meaning of history? History means we have a written document. Okay, now we have a written proof that what happened earlier. Okay, the earliest writings were the pictures found in caves. So the first writing, okay, so the first thing, the first written document which we found out, that is in the form of paintings. Okay, that is in the form of pictures found from the caves. Okay, later on people wrote on things like pillars, rocks, palm leaves, clay tablets and tree barks. ठीक है, अच्छा, हिस्ट्री, जो हिस्ट्री का सोर्स है वो सबसे पहले हमें मिला था जो केव्स में पेंटिंग है. ठीक है, वहां से हमें मिला था. ठीक है, लेकिन केव की पेंटिंग कहाँ पे है? देखिए, मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स है.
ठीक है। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा केव्स हैं। ये जो दोनों केव्स है ना, अजंता एंड एलोरा, दिस आर टू डिफरेंट केव्स प्रेजेंट इन लोकेटेड इन महाराष्ट्र। एंड भीमबेटका केव्स, दिस आर द एंशिएंट केव्स व्हिच आर फेमस फॉर पेंटिंग्स। ओके, यहाँ पे जो पेंटेड वो सब है ना, जितने भी सोर्सेज हैं उनके, ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट था जिससे हमें ये पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, उसके बाद पेंटिंग्स के बाद और किन किन फॉर्म्स में हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हिस्ट्री के, आप देख सकते हो पिलर्स। ठीक है, बड़े बड़े पिलर्स थे, उस पे इंस्क्रिप्टेड थे, मींस उस पे लिखे जाते थे। जो पहले के राजा लोग थे वो अपने इंस्क्रिप्शंस भी लिखवाते थे, मींस देयर वाज अ स्टोन एंड ऑन दैट स्टोन द एंटायर हिस्ट्री अबाउट दैट किंग इज रिटन देयर। फिर पत्थरों पे लिखे जाने लगे, पाम लीव्स, क्ले टैबलेट्स एंड ट्री बार्क्स। ठीक है, फिर पाम लीव्स पे, फिर उसके बाद गीली मिट्टी जो होती थी उस पे लिखा जाता था, फिर उसको ड्राई कर दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद ट्री बार्क, मतलब जो पेड़ की जो एकदम बहुत सॉफ्ट सी छाल होती है, ठीक है, उसको बार्क कहते हैं। ठीक है, जो ट्रीज की बहुत पतली पतली छाल होती है जिसको आप इजीली पील कर सकते हो एंड यू कैन इजीली राइट ऑन देम। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जिस पर हिस्ट्री लिखी जाने लगी। ठीक है, दिस इज हाउ राइटिंग इवॉल्व्ड and it's how we know so much about the past. Okay, so if I'm talking about that the entire history of king is written on that inscription, okay, even tree barks are also used. How I can say all these things? Because they all are present in front of us in the form of written document, and that written document is called as history. Okay, now let's move further. Actually this is for you. Okay, just think about it and answer. Okay, ऐसा नहीं कि इसको आप छोड़ दोगे, इसे आपको खुद से परफॉर्म करना है इसको। ठीक है, देखो डेट्स इन हिस्ट्री। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और ये भी है कि जो हिस्ट्री में डेट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, सी हिस्ट्री बिना डेट के हो ही नहीं सकती है। ओके, यू कांट स्टडी हिस्ट्री विदाउट स्टडिंग अबाउट डेट्स। ओके, सी डेट्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री डेट्स आर नॉट रिटन इन द नॉर्मल वे। अच्छा, आज कितना है? आज है आपका 16 जून। ये तो मैंने बहुत सिंपल से बता दिया, लेकिन जो हिस्ट्री के डेट्स होती हैं वो इतनी नॉर्मल नहीं होती हैं। ठीक है, कि मतलब इस टाइम पे आज से 1000 साल पहले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री की जो डेट्स होती हैं उनका लिखने का तरीका अलग होता है। और कैसे अलग होता है? लेट्स हैव अ लुक। देखो, दे आर रिटन इन आइदर एडी और बीसी नोटेशन। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो हम लिख देंगे ना 16 जून 2025। इट्स अ नॉर्मल डेट फॉर human beings. But you know what, history documents are always written in the form of AD and BC. Okay, they are always written in the form of AD and BC. Now what is the meaning of AD and BC? Let's have a look. Before Christ or BC refers to the number of years that passed before the time of Jesus Christ. Anno Domini AD means in the year of the Lord. See, actually our history is divided into basically two parts, means basically two date times. They are AD and BC. Okay, BC means before Christ and AD means Anno Domini. Okay, now what is the meaning of BC? BC का मतलब ये है यहाँ पे कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले का जो टाइम था उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? उसे हम डिनोट करेंगे फॉर एग्जांपल 450 BC। ठीक है, मतलब 450 ईयर है और वो जीसस क्राइस्ट के पहले पैदा होने के पहले का है। ठीक है, अब आता है आपका एनो डोमेनी। अब ये एनो डोमेनी क्या है? एनो डोमेनी का आपका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद का टाइम। ठीक है, तो उसको ये कहा गया। जीसस क्राइस्ट कौन है? जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियंस के लॉर्ड माने जाते हैं। ठीक है, क्रिश्चियंस कम्युनिटी के। अब आप देखो, हिस्ट्री जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैं टाइम की बात कर रही हूँ। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू बिफोर क्राइस्ट एंड एडी, एनो डोमेनी। ठीक है, before Christ means the time which is spent, okay, means the time which went out before the birth of Jesus Christ. Okay, and AD means after the birth of Jesus Christ. Okay, that's why AD is known as in the year of the Lord. Okay, now see, the reference point is the day of Jesus Christ's birth, which occurred more than 2000 years ago. Okay, always remember, my dear student, Jesus Christ's birth here is taken as the reference point in history. Okay, and it is taken as 2000 years ago. Okay, all dates that fall before Christ's birth are counted backward. Okay,
सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सी, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के पहले के जो टाइम है, मीन्स जो हिस्ट्री है, ठीक है, मीन्स जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले की जो हिस्ट्री है वो हमेशा बैकवर्ड काउंट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 11 के बाद 12 आया, 12 के बाद 13, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले ये बैकवर्ड चला जाता है, मतलब 12th के बाद 11th 10th 9th, ये इस तरीके से चलता है। ऐसा नहीं कि 9 10th 11 12th, नहीं, ये चलता है 12 11 10 9, ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर याद रखना। ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड जनरलाइजेशन अबाउट रिलीजन, historians now refer to BCE and CE instead of BC। अच्छा, अब देखो, जो हम रिलीजन की बात करते हैं, ठीक है, तो रिलीजन के लिए इन लोगों ने, अब मैं अभी ये बात कर रही हूं, पहले तो AD और BC था, दैट्स इट, बट नाउ टू अवॉइड द कंफ्यूजन रिगार्डिंग रिलीजन, historians are nowadays using the term BCE and CE। okay, means they are using BCE not BC। okay, पहले क्या था, बिफोर क्राइस्ट था, अब क्या करते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा यूज करते हैं। ठीक है, मींस एक एक्स्ट्रा ई आपका हिस्टोरियंस ने यूज किया है यहाँ पे। ओके, नाउ अब देखो, एंड एडी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब BCE और AD, ये दो टाइम आपका यूज होता है आपके मॉडर्न डे हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, अच्छा, CE का क्या मतलब है, देखो, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, while CE is a common era। ठीक है, before common era। okay, okay, sorry for my mistake, I told you that before Christ era, no, that was not a before Christ era, it's before common era। ठीक है, तो क्राइस्ट के पैदा होने से पहले क्या होता था, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, BC था, लेकिन अब उसको हिस्टोरियंस ने रिप्लेस कर दिया है विद BCE, मींस बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और AD, एनो डोमिनी। ठीक है, चलो, अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन, एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बॉक्स में आपके लिए इंफॉर्मेशन है। सी का क्या मतलब है, देखो, सी इज एन एब्रीवेशन ऑफ शॉर्ट फॉर्म द लैटिन वर्ड सिरका। ठीक है, सिरका एक लैटिन वर्ड है जिसको हम हिस्ट्री में स्मॉल सी के तौर पर डिनोट करते हैं। ठीक है, इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिरका, इट मीन्स अप्रोक्स। सी, इन हिस्ट्री मैनी थिंग्स, the date of many things, exact means the exact date of many things we don't know। okay, suppose the birth era of some king, we don't know, we don't know the exact date of birth of that particular king। so now here we are going to use approximately। okay, here we are going to use approximately, means in this century and in that year, approx in this century and approx in this year, the birth of this particular king is taken place। In case of an event for which no exact date is known, historians use circa or C। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने आपको जस्ट ये चीज बताया कि जब हमें पता ही नहीं है एग्जैक्ट डेट, तो वहां पे हम लैटिन वर्ड यानी सिरका यूज करते हैं, और हम सिरका नहीं लिखते हैं, वी डिनोट सिरका विथ स्मॉल c। ओके, नाउ पीरियड एंड पीरियडाइजेशन। ठीक है, हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द पीरियड्स ऑफ द टाइम। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक। Prehistory is a very old time before people started writing things down। See, the most ancient part of our history is prehistory। okay, in prehistory, okay, in prehistory, people didn't wrote any kind of document। okay, prehistory means only prehistory, no written documents are available for this era of time। okay, it's when humans were still learning and evolving, and there were no written records of what happened। actually, prehistory is that era when still humans are learning and still our early human beings are evolving। okay, that's why no written documents are available for prehistory era। okay, people back then were mostly hunters and gatherers, meaning they hunted for food and gathered plants, and they didn't stay in one place for too long। In prehistoric period, our early men are basically hunters and gatherers, okay, and they are nomads, means they don't used to live at a place for longer time of for longer duration of time। okay, they frequently move from one place to another place during prehistory time। History, on the other hand, is the time after writing was invented। okay, see, history, if I am talking about history, it means that period of time
about which written documents are present. Okay, only that era is called as history. And if there is no written document is present, that era is called as your prehistoric time. Okay, historians often split this into three parts. And historians, okay, historians split it is into three parts. And what are the name of those three parts? Ancient, medieval, and modern times. See, historians divided our history into three parts: ancient history, medieval history, and modern day history. Okay? These periods help us to understand different stages of human development and how societies changed over time. Actually, if we are talking about ancient history or medieval history and modern history, then we are going to see how throughout the period of the history humans are evolved, how developments are taken place. Okay, so all these things about your prehistory and history time. Okay, now let's see. हाउ डू वी स्टडी द पास्ट? अभी तक तो मैंने बात कर लिया है एंशियंट, मिडाइवल एंड ऑल सब, ठीक है, लेकिन अब हिस्ट्री के बारे में पढ़ते कैसे हैं, हमें पता कैसे चलता है, ठीक है, मुझे पता कैसे चलता है ये सारी चीजें, मुझे या आपको या हम सब लोगों को, अभी हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। देखो, to understand the past, we need help from different experts like historians, archaeologists, and others. See, if you want to understand, okay, if you want a good understanding about our past, then we have to take the help of historians, archaeologists, and many other group of people to to understand the complete meaning of history. Historians and archaeologists are people who study history using different sources. Okay. Earlier I already explained you what is the meaning of historians and archaeologists. Okay, historians and archaeologists are the group of people who help us to study about history. Okay, archaeologists dig up old places like ancient cities and medieval sites. Okay, now who are archaeologists? Archaeologists are those group of people who dig out any ancient city, okay, and any medieval sites. Okay, they look at what left behind like buildings and tools and figure out what it all means. These experts work together to help us learn about our history. Okay, and when they do this excavation work, they got to know about various types of equipments like your jewelry item. Okay, और बहुत सारी हिस्ट्री में, अच्छा ये देखो, ये देख रहे हो, ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो जब ये लोग खुदाई करते हैं ना, तो ज्वेलरी हमें मिलती है उस एरा की, जब पहनते थे, जो लेडीज यूजुअली पहनती थी, हमें अर्दन पॉट्स भी मिलते हैं, ठीक है, कि जैसे जिसमें खाना वो सब बनाते थे, हमें मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, बिल्डिंग्स मिलते हैं, ठीक है, तो ये सब कौन हमें खोज के देता है? तो ये सारा का सारा जो काम है ना, ये आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है, एंड द प्रोसेस थ्रू विच दे डिग आउट ऑल दिस थिंग इज कॉल्ड एज द एक्सकवेशन प्रोसेस. ओके, these experts work together to help us learn about our history. Okay, now archaeologists and historians join their hands to explain the exact meaning of our history. Okay, now see, sources of history. अच्छा, अभी हमने पढ़ लिया कि हमें यहां से मिलता है, ठीक है, एक्सकेवेशन के थ्रू, ठीक है, हिस्टोरियंस ने पढ़ाई किया, लेकिन हिस्ट्री के सोर्सेस क्या हैं, कहां से ये हमें मिलता है? ठीक, अच्छा ये देखो, अगर ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है, अगर ये एक्सकेवेशन का वर्क कर रहे हैं, तो ये ऐसा तो नहीं कि रैंडमली गए और किसी जगह की खुदाई शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता है, ये कहीं से सोर्सेज हमें मिलते हैं, ठीक है, ये कहीं से हमें सोर्सेज मिलते हैं, उसी के बाद आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस उस प्लेस के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो वो सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? लेट्स हैव अ लुक. सी, the things that help us understand the past are called sources of history. Okay, the sources of history means a very important thing. The things which help us, okay, means the evidences which help us to study and understand about our past is simple called sources of history. Okay, we learn about ancient times from two main groups of sources. Okay, we all know about our ancient times. Okay, we all know about our ancient time with two main sources. And what is the name of those two main sources? Archaeological, which means stuff dug out from the groups, and literally, which means old writing and stories. ठीक है, अच्छा देखो, हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? दो ही चीजें हैं, एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं और दूसरा होता है जो रिटन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है,
ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल साइट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, जहां पे भी ये आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई का काम करते हैं, ठीक है। ऑल दोस साइट इज कंसिडर्ड एज योर आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ओके। लाइक इंडिया में ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनके अंडर में ही ये सारा का सारा आर्कियोलॉजिकल का काम होता है। और दूसरा कौन सा सोर्स है आपका, लिटरेरी, ठीक है। एंड लिटरेरी मीन्स ऑल द ओल्ड रिटन डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रेजेंट, ओके। सो दिस आर द टू सोर्सेज विच वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर हिस्ट्री. Now, archaeological sources. We are going to see about archaeological sources in detail. Let's have a look. See, archaeological sources are things from the past that are really important for understanding history. Archaeological sources क्या है, ये बहुत ही important है हमारी history को समझने के लिए. They include stuffs like old building, houses, pots, monuments, coins, tools, jewelries, writings on walls, metal plates and even लेफ्ट ओवर फूड. अच्छा, आर्कोलॉजिकल साइट्स में क्या क्या चीजें आती हैं आपके, आर्कोलॉजिकल साइट्स में आपकी आती हैं जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है. उसके बाद ज्वेलरी आती है, उनके खाने के आइटम्स होते हैं, वो जो बर्तन वो जिसमें खाना पकाते थे वो होता है, ठीक है. उसके बाद वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, कपड़े हमें कपड़े भी मिलते हैं, वो किस तरीके के वेपन्स यूज करते थे, ठीक है. ये सारी की सारी चीजें हमें आर्कोलॉजिकल में मिलती हैं, ठीक है. नाउ ब्यूरियल साइट्स आर ऑल्सो काउंट एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. अच्छा, ये सारी चीजें तो वहां पे जहां पे ये लोग रहते थे, बट ह्यूमंस वो भी थे, एंड एवरी ह्यूमन बीइंग आर मॉर्टल, ओके, दे हैव टू डाई वन डे, ओके. सो ऑल द ब्यूरियल साइट्स, जहां पे मरने के बाद इनको दफनाया जाता था या इनका जो भी लास्ट रिचुअल होता था, ऑल दोज ब्यूरियल साइट्स आर ऑल्सो एक्ट एज योर आर्कियोलॉजिकल sources, okay. These are all things that help us to learn about how people lived in the past, and all those things combinedly help us to know about the life of early human beings, how they used to live, what type of clothes they used to wear, what kind of food they used to eat, okay, and what are the rituals, okay, what are the rituals they followed during their uh, burial sites, okay. So all these are your archaeological sources. Under archaeological sources, we are going to see about the first archaeological sources, inscriptions and edicts, okay. Inscriptions and edicts are the first archaeological sources. Inscriptions are written, carved on the rocks, pillars, cave walls, fort walls, places, temples and clay or copper tablets. Studying inscriptions is called epigraphy. अच्छा, inscriptions क्या होते हैं अब आप देखो, ये देख रहे हो, ये edicts of अशोका द ग्रेट, वो है coins from the गुप्ता पीरियड, ठीक है. तो ये सारे के सारे आपके inscriptions होते हैं, ठीक है. पहले क्या होता था, inscription का मतलब है कुछ पत्थरों पे लिख दिया गया, ठीक है, पाम लीव्स पे लिखा हुआ है, मड में लिख के उनको सुखाया जाता था धूप में, ठीक है. उसके बाद जो पेड़ की बहुत नरम छाल होती है उससे बुक बनाई जाती थी और उस पर लिखा जाता था. तो ये सारे के सारे ना आपके इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, जो आज भी मौजूद हैं, जो आज भी प्रेजेंट हैं, ओके. एंड ऑल दिस इंस्क्रिप्शंस आर कॉल्ड एज एपिग्राफी, मींस द स्टडी. अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे देखा एडिक्ट्स ऑफ अशोका द ग्रेट, अशोका के टाइम पे इस तरीके से लिखा जाता था, ठीक है. और ये आपके देखो गुप्ता पीरियड के, गुप्ता पीरियड जो गुप्ता डायनेस्टी थी उनका एक एरा था, ये उस टाइम ये ऐसे कॉइन्स यूज करते थे. तो ये सब क्या है, दे ऑल आर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, दे आर टेलिंग अबाउट द हिस्ट्री, दे आर टेलिंग ऑल अबाउट द टाइम इन विच दे यूज्ड टू लिव, ओके. अच्छा, स्टडिंग इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, ओके. अच्छा, अब मैंने तो बता दिया ये है, ये है, ये है, पर ये है क्या, इनकी पढ़ाई को ही हम कहते हैं एपिग्राफी, ओके. Inscriptions are important because they tell us the names of king, how long they ruled, the size of their emperor and most important event during their reign. Okay, अब inscription से हमें क्या क्या पता चलता है, राजा का नाम क्या था, वो किस किंगडम को बिलोंग करते थे, उन्होंने कब से कब तक रूल किया, वो पैदा कब हुआ है, वो मरे कब, ठीक है. और वो मतलब सारी चीजें एक राजा की लाइफ के बारे में we all got to know about through this inscriptions. That's why inscriptions are the most important sources in archaeological excavations, okay. They also gave us insight into society by describing people's religious and cultural practice. See, we all are human beings and we follow certain religion, okay, and we follow certain cultures.
So the people of that time, they also follow some religion and they also follow cultural practices. Okay, so through the help of these inscriptions, we also got to know what kind of religion, what kind of cultural practices they used to do. Okay. Hmm. After, see, monuments. Okay, after inscriptions we also found about monuments. Okay, those monuments are dig out through the excavation work. See, the old buildings like stupas and temples are really important for history because they tell us a lot about how people used to live. See, monuments means old buildings which is present at this time also, they are very important because they used to tell us about that what type of construction work, okay, what type of construction work usually done in that era. Okay, and basically there are two types of monuments are present: stupas and temples. Okay, in India, if I talk about Indian country, stupas and temples are the most important monument sources. Okay, they show us things like how they spent time together, what they believed in, and what their culture was like. Okay, now ये हमें ये बताते हैं, ये इन कल्चर, इन स्तूपास और टेम्पल्स को देख के कि उस टाइम लोगों की रिलीजियस बिलीफ कैसी रही होगी, उनके थॉट्स प्रोसेस कैसे रहे होंगे और उनका कंस्ट्रक्शन का वर्क कैसा रहा होगा. ठीक है. अच्छा, one of the most important monumental sources your the great stupa at Sanchi. Okay, Sanchi is a place located in मध्य प्रदेश. ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रेट स्तूपा मिलेंगे जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन को बिलोंग करते हैं. ये पूरा का पूरा जो है पत्थर का एक बना हुआ है और आप देख रहे हो ये जितने भी ये सारे हैं इन सब पे ना लॉर्ड बुद्धा की लाइफ हिस्ट्री लिखी हुई है. ठीक है, देन यू कैन सी व्हाट अ रिच हिस्ट्री वी हैव. ओके, नाउ सी, अब ये इंस्क्रिप्शंस और मॉन्यूमेंट्स के अलावा भी हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेज हैं which tell us about our past. And what are those sources? Let's have a look. See, many items like coins, tools, weapons, pots, statues, seals, paintings and jewelry are found during excavation. See, जब excavation का काम होता है ना, ऐसा नहीं कि inscriptions मिल गए, monuments मिल गए, that's it. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. उस टाइम हमें coins मिलते हैं, weapons मिलते हैं, tools मिलते हैं, कपड़ों के pieces मिलते हैं. तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें हमें हिस्ट्री के बारे में बताती कि उस टाइम के लोग क्या खाते थे, क्या कैसा कपड़ा पहनना पसंद करते थे. ठीक है, अब देखो, these objects come from different times in history and give us valuable information about past cultures and civilization. So all those items are came from different time in history, like some belong to ancient history, some belongs to medieval history. Okay, but all those sources give us a very much valuable information about our history. See, coins are especially helpful because they can tell us when certain dynasties were around. ठीक है. अच्छा, डायनेस्टीज के बारे में जब भी बात होती है, ठीक है, जब भी डायनेस्टीज के बारे में बात है तो सबसे पहला जो दिमाग में बात आती है वो है कॉइन्स, क्योंकि हर डायनेस्टी ने अपने अपने एक स्पेशल कॉइन्स चालू किए थे. जैसे कि आप देख रहे हैं गुप्ता पीरियड के टाइम के कॉइन्स हैं. ठीक है, जैसे आज हम मॉडर्न डे वर्ल्ड में रहते हैं, देन वी हैव कॉइन्स 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपीज कॉइन एंड 10 रुपीज कॉइन एंड इवन 20 रुपीज कॉइन ऑल्सो. तो आप देखो तो ये सब के अभी क्या है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो सिंगल कॉइन चलते हैं. ठीक है, अगर 1 रुपी कॉइन जो न्यू दिल्ली में चलेगा वो आपका साउथ में भी चलेगा, वही नॉर्थ ईस्ट में भी चलेगा, वही गुजरात में भी चलेगा, वही कश्मीर में भी चलेगा. ठीक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वी कांट चेंज दोस कॉइन्स. बट यू नो व्हाट, इन आवर कंट्री इंडिया, different dynasties rule for over a period of time. Okay, so all those dynasties launched their own coins. Okay, they all shows the religious and cultural practices of the people who made them, and on those coins, okay, on those coins they inscripted about their, they printed about their own religious belief. For example, this particular king believe on this particular god, then on the coin which they used to launch, okay, they printed their god picture on that coins. Okay, so through this we got a very good knowledge that what kind of religion, what kind of cultural belief, what kind of societal belief they used to follow. Okay, coins also tell us what kind of metals were used during different times. Studying coins is called
मैटिक। ओके, अब देखो कॉइन्स किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं। तो जैसे जैसे पीरियड्स चेंज हुए हैं, जैसे जैसे सेंचुरीज चेंज हुई हैं, कॉइन्स के फॉर्म भी बदले हैं। कभी कॉइन्स लोहे के होते थे, कभी कॉइन्स कॉपर के होते थे, किसी ने गोल्ड कॉइन चलाए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे, ओके, चाहे वो एंशिएंट हो चाहे मिडाइवल, किस टाइप के मेटल्स यूज होते थे। ओके, एंड द स्टडी ऑफ कॉइन, ओके, द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड एज न्यूमिस्मेटिक। ओके, अच्छा आप लोगों ने अभी इससे पहले एपिग्राफी के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिग्राफी? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ओके, study of inscriptions is called epigraphy and studying of coins is called numismatic. Okay, artifacts and other artifacts are things made by people like pottery, statues, tools and ornaments. They tell us a lot about how people lived and what their culture was like. Okay, now the other sources through which we get the information about our past history are artifacts, and in artifacts we get about the knowledge of pottery. Okay, the statues, like some kingdom used to make bronze statue, some kingdoms used to make iron statues, copper statues, as well as gold statues. Okay, so all those kind of statues tell us about our past history. Okay, now details about coins. The first coin in ancient India were called punch marked coin. So the very first known coin present in our country India is called as punch marked coin. They were crafted from silver and copper and came in different shape. So those punch marked coins are made up of silver and copper. Okay, and they came in different shapes and sizes. These coins are made using materials like tin, lead, silver, and protein. So, apart from silver and copper, all those coins are also made from tin, lead, silver, and protein. Often they had symbols like the sun, mountain, elephant, chariot, tiger, and lion punched on them. Why those coins are called as punched mark coin? Why? Because on those coins, the pictures of sun, elephant, tiger, chariot, and mountains, etc., and etc., punched mark on them according to the order of their king. Okay, now literary sources. Okay, after archaeological sources, now we are going to discuss about the literary sources which are present, which tells us about our past history. Different types of writings, both long and short, are important sources of history. See, all types of writing, maybe short or maybe long, they all are important sources for our history. The oldest form of writing, called cuneiform, involved making wedge-shaped mark on clay tablets. अच्छा हम टैबलेट्स की बात करते हैं. यू ऑल स्टूडेंट यूज टू प्ले गेम्स ऑन टैबलेट्स. आपको पता है सैमसंग के टैबलेट्स, आईपैड्स एंड ऑल. हमारे एंशिएंट इंडिया में भी टैबलेट्स होते थे. ठीक है, हमारे एंशिएंट इंडिया में भी जो टैबलेट्स होते थे वो आपके क्ले के बने होते थे. और ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है आपके राइटिंग का. ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि लिटरली सोर्सेज में सबसे ज्यादा पुराना कौन सा सोर्स है, ठीक है, तो वो आपका क्ले टैबलेट्स है. ठीक है, तो ये क्ले टैबलेट्स क्या होता था, उस पर लिखा जाता था. क्ले का मतलब मिट्टी. ठीक है, गीली मिट्टी पे आप कुछ भी लिख दोगे, यू कैन राइट एनीथिंग, एंड बाय ड्राइड ऑन द सन रेज, बाय ड्राइड अंडर द सन रेज, दे आर अवेलेबल. ओके, दे आर अवेलेबल टू यूज. ओके, सो सबसे पुराना जो आपका राइटिंग का फॉर्म है उसे क्यूनियो फॉर्म कहा जाता है. और क्यूनियो फॉर्म का मतलब है कि आपने गीली मिट्टी के ऊपर जो भी लिखा है. ठीक है, और वो उस टाइम के टैबलेट्स के फॉर्म में हुआ करते थे. ठीक है, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट राइटिंग सिस्टम. और इसके बाद बहुत सारी राइटिंग सिस्टम्स भी डेवलप हुए. कैसे डेवलप हुआ, कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए, लेट्स हैव अ लुक. पीपल यूज टू राइट डाउन इवेंट्स एंड मेमोरीज बाय हैंड. अच्छा उस टाइम ना कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, सो ऑल द पीपल यूज टू राइट बाय यूजिंग देयर ओन हैंड्स. These handwritten records, called manuscripts, were written on various materials like rocks, parchment, palm leaves, birchbark, clay tablets, and letter on paper. So all those written documents, all those handwritten documents are called manuscripts. You all heard about manusmriti, manuscripts. So all those written forms, all those written hand records are called as manuscripts. And manuscripts is available in the form of rocks. On the rocks there are many sources are written. Okay,
parchment, palm leaves, birch bark, clay tablets. Okay, so after crossing all this thing, later on they all are written, means manuscript is written on paper. Okay, books, religious texts, stories from travelers and biographies are some examples of literary sources. अच्छा, literary sources के और कौन कौन से examples हैं? Books, जो कि बहुत सारे poets ने, बहुत सारे writers ने different different era में लिखे हैं. उसके बाद religious text, ठीक है, अपने अपने रिलीजन की सबकी अपनी अपनी किताबें होती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी हिस्ट्री की. इसके बाद जो ट्रैवलर्स, पहले क्या होता था ना, लोग घूमने आते थे और वो कोई ऐसे कॉमन लोग नहीं आते थे. आप सब जानते हो, राजा होते थे, राजा किसी को भेजते थे कि आप जाओ ट्रैवल करके आओ इस कंट्री में और इंफॉर्मेशन लेकर आओ. तो जब वो घूम के आते थे ना, तो वो जो भी आपको इंफॉर्मेशन देते थे, दे ऑल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिटरली सोर्सेस. ओके, उसके बाद क्या होता था? बायोग्राफिक. बहुत सारे राजा अपनी खुद की जीवनी लिखवाते थे. ठीक है, सो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एनी पीपल इज कॉल्ड एज बायोग्राफी. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ना आपके लिटरली सोर्सेज हैं. ठीक है, even his stories passed down orally are considered historical records. See, if I'm talking about historical records, then I'm not only talking about written sources. Even oral or verbal sources are also considered as literary sources. Okay, now literary sources are divided into two main types. Now the literary sources is divided into two main parts: religious, which includes text about religion. So the first part of your literary source is a religious text, and all those religious texts tell us about the particular religion. And the second one is secular. What is the meaning of secular? Which is written about other topics. Okay, see, in religious text we are talking about only religion, and in secular text we are talking about all things except religion. Okay, now let's see what is our available religious literatures. Religious literature consists of texts with religious themes which fall into two main categories. Already the name shows religious literature, means here we are going to talk about religion. So in India, there are two main categories of religious sources are available. For example, the first one is your Vedic literature. Okay, the first part of our religious literature is about our Vedic literature. In Vedic literature, there are four Vedas are included, like Rig Ved, Samved, Yajurved and Atharvaved. Okay, Rig Ved, Samved, Yajurved and Atharvaved. These are the four main Vedas are included in Vedic literature. Now the second one is epic stories like Ramayana and Mahabharata along with the Bhagavad Gita and the Puranas. So the second form in which our literary sources, religious literary sources are present, they are in the form of epic stories like Ramayana and Mahabharata along with Bhagavad Gita and our Purans also. Okay, now see, secular literature. Now we are going to talk about secular literature. Literary sources are divided into two parts: religious text and secular. Okay, now the secular, what is the meaning of secular? Books or texts that aren't about religion are called secular literature. Religious literature means they all are talking about only religion, and secular literature means they are talking about each and every aspect of human life except religion. Okay, for example, Kautilya's Arthashastra fall into this category because it gives advice on governing. So the best example of secular literature is the famous Kautilya. Okay, the famous book written by Kautilya, Arthashastra. Okay, it comes under this secular literature because Arthashastra give us the advice how a king should govern. Many travelers from places like Greece, Rome, China, Tibet, and Arabia visited India and wrote about the people's life, custom, and tradition, leaving behind valuable accounts. Okay, I also told you about the travelers. Okay, so in India, the travelers from the countries like Greece, Rome, China, Tibet, and Arabia. So they came. So they came to our country India. Okay, and after that they written a document. Okay, they written a book on how the people of India live, what type of custom people of India used to follow, what tradition they follow. Okay, now two Chinese travelers
Fahian and Zhuezang visited India to learn about Buddhism and wrote about their journey. So there are the two most famous Chinese traveler are Fahian and Zhuangziang. Okay, they are the most important Chinese traveler who visited in ancient India, and they learn many things about Buddhism. Okay, and after learning about Buddhism, they wrote, means they given the form of their gained knowledge, the form of book. Okay, now oral history. All these are the written documents, okay, which are the solid proof of our history. But apart from them, I also told you, my dear students, we have some oral or verbal sources of our history. Let's have a look. It is another way historians tell about the past. अच्छा, oral history क्या है? Oral history एक दूसरा तरीका है जिससे हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं. It based on personal experience and opinions shared by people through speaking, like folk tales, songs and myth. आप सब जानते हो जो राजस्थान है हमारा, राजस्थान क्या है? राजस्थान इज द लैंड ऑफ किंग्स, राजस्थान इज द लैंड ऑफ फोक टेल्स. ओके, तो आप जानते हो जो ओरल सोर्सेज होते हैं वो आपके फोक टेल्स, सॉन्ग्स या मिथ्स के बारे में होते हैं. ठीक है, किसी किसी स्टेट में या किसी पर्टिकुलर जगह में बहुत ही फेमस कोई मिथ होता है. ठीक है, एक कोई बहुत ही फेमस वहां का गाना होता है, एक बहुत ही फेमस फोक टेल होता है. तो इन सब के जरिए वहां के लोग बताते हैं हमारी इतनी अच्छी इतनी रिच हमारी हिस्ट्री रही है. ओके, सो दे ऑल आर द सोर्सेज ऑफ आवर ओरल हिस्ट्री. These stories are passed down from one generation to the next through spoken word. Okay, अच्छा, ऐसा नहीं कि folk tales ये songs ये myth मॉडर्न डे के, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है. दे ऑल आर पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ओके, नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन. अच्छा, हमने हिस्ट्री की तो बहुत बातें कर ली, बट आप जानते हो हिस्ट्री बिना ज्योग्राफी के पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, मैंने बोला कि ये लोग आए थे यहाँ पे, तो आप समझो इन्होंने अपनी जगह चेंज की. इट मीन्स दे चेंज देयर लोकेशन. ओके, एंड लोकेशन इज रिलेटेड टू योर ज्योग्राफी. ठीक है, अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री में ज्योग्राफिकल लोकेशंस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ठीक है, द ज्योग्राफी ऑफ अ प्लेस हैज ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट इन शेपिंग इट्स हिस्ट्री बोथ ग्लोबली एंड इंडिया. It not only affects how an area grows but also how it interacts with neighboring regions. अच्छा, आप जानते हो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर कोरिलेटेड विद ईच अदर. ओके, आप सब लोगों को पता है कि जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं वो सारी की सारी नदियों के किनारे बसी. ठीक है, क्यों नदियों के किनारे बसी? क्योंकि उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन ही ऐसा था. ठीक है, उनका जो किसी भी हिस्ट्री का मतलब कोई भी हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा रिच होती है, फ्लरिश्ड होती है ज्योग्राफिकल लोकेशंस की वजह से. ठीक है, इन इंडिया की ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूड्स रिवर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स एंड प्लेन. इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो आपके रिवर्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स और प्लेन्स हैं. ठीक है, द हिमालयाज इन द नॉर्थ एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर एंड द कंट्री इज सराउंडेड बाय वाटर on the three sides. If I'm talking about Himalayas, okay, which is present in our north, okay, Himalayas is act, okay, means Himalaya act as a natural barrier. Okay, Himalaya act as a natural barrier and it is and the country is surrounded by water on the three sides. Okay, just like if Himalaya is surrounded, if Himalaya act as a natural barrier, then our country India, it is surrounded by three sides with the ओशन एंड सीज. ओके, जो चार डायरेक्शन है हमारी कंट्री इंडिया के, हमारा जो नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में हिमालयाज हैं जो कि नेचुरल बैरियर का काम करते हैं. बट हमारा ईस्ट, हमारा वेस्ट और हमारा साउथ, वो तीनों को तीनों हमारे सीज या ओशन से हैं. जैसे कि ईस्टर्न इंडिया इज कवर्ड विथ बे ऑफ बंगाल, वेस्टर्न इंडिया इज कवर्ड विथ अरेबियन सी एंड सदर्न इंडिया इट इज कवर्ड विथ इंडियन ओशन. ओके, माउंटेन्स पासेस सर्व एज रूट्स फॉर ट्रेड, ट्रेवल्स एंड बैटल्स. ठीक है, माउंटेन पासेस, ठीक है, जो माउंटेन्स होती हैं वहां पे भी रास्ते बने होते हैं, वो हमारे ट्रेड, हमारे कॉमर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. Throughout history, people have lived near rivers like Indus, Ganga and Narmada because they provided water, fertile land for farming and transportation. My dear student, if you see throughout the history, all the civilizations, all the kingdoms are flourished on the bank of the rivers. Okay, and in India, if I talk about India, all the civilization, Indus Valley civilization and all the kingdoms are flourished on the bank of three rivers mainly. Indus, Ganga and Narmada. Okay,
And why all these civilizations are located on the bank of the river? Because the area which is the area which is surrounding of this banks of river, they all are very fertile, and all time means throughout the year we can get easy supply of water, and they are very and if you used to live in all those areas, then our cultivation, our irrigation problem will be solved. Sea routes along India's coast have been used by many nations for trade and cultural exchange. पुराने टाइम से जो सी रूट्स है हमारे, वहां से इवन आज मॉडर्न वर्ल्ड में भी हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं वहां से, ठीक है. Geography has always played a big role in how India and the world develop and interact with each other. ठीक है, तो ज्योग्राफी ने थ्रू आउट द हिस्ट्री मीन्स ज्योग्राफी ने हर पीरियड ऑफ हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, चाहे वो हमारा इंडिया हो चाहे वर्ल्ड लेवल हो, उनको शेप करने में. ठीक है. So, my dear student, this is all about in this chapter. But come with me and let's have a look on some new words which we learned through this chapter. See, archaeologists, people who study old things that have been left behind like tools, bones and buildings to learn about past human life. Okay. Edicts, official orders or commands issued by a ruler or government. Punched marked coins, old coins that have symbols or designs stamped onto them using a sharp tool or punch. These were one of the earliest types of coins used in ancient India. Okay. My dear student, let's have a look the summary of this chapter. What we learned through this chapter. See, the first thing which we learned through this chapter is history is the study of past events derived from the Greek word historia, meaning inquiry. Okay. The second thing which we learned, past or history is divided into prehistory, means before written documents are present, and history, post invention of writing, with periods labeled as ancient, medieval and modern. Sources of history. What are the sources of history? Archaeological, tools and buildings, literally manuscripts, oral traditions. Dating system includes BCE and CE, and circa, small c, denotes approximate dates. Key evidences from inscriptions, edicts, monuments and artifacts provides cultural and social insights. Geography influences historical development through natural features, trade routes impacting cultural exchanges and conflicts. Okay, so I hope, my dear students, you've got a very good understanding of this chapter. Okay, go thoroughly through this chapter and complete the exercise based on this chapter. Now I'm taking leave and going to meet with you all in my next session with a new video. Till then, take very good care of yourself. Bye.